Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the quarantine series. I hope you're doing well. अपना ख्याल रख रहे हैं और लोगों का ख्याल रख रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बतें भेजने का पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान के बाहर से ऑन क्वारंटीन सीरीज। अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज़ बीन ग्रेट। आई हैव लर्नड अ लॉट। बहुत शुक्रिया उन तमाम मेहमानों का जो कि वक्त निकालते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू है पब्लिक सर्विस के हवाले से, and we'll have a very talented bureaucrat join us, female bureaucrat. So as a female succeed करना bureaucracy के अंदर, वो experience जानेंगे। इसके अलावा public service के हवाले से हमारे दिमाग में of course perceptions हैं। जो लोग ऑफ कोर्स फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें पब्लिक सर्विस में लोग रहे हैं, वो समझते हैं कि व्हाट इज़ द ब्राइट साइड, व्हाट इज़ द लवली साइड दैट द ब्यूरोक्रेसी मेक्स हैपन इन दिस कंट्री। साथ साथ कुछ डीपर भी डाइव इन करेंगे, एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्या सक्सेसेस रही। खुद जो है बहुत अच्छा गाती भी हैं, बचपन से गा रही हैं, तो उन्होंने बहुत मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रूर कुछ गाना सुनाएं, तो वो गाना भी सुनाएंगी, अपनी शायरी भी सुनाएंगी। अगर पेंटिंग सिखा सकी तो वो भी करेंगी। पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में आपको ये बात बताऊं कि ब्यूरोक्रेसी को मैं दूर से जानता था, अब जो मैं करीब से जानता हूं तो आई मस्ट टेल यू कि बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइव्स मैंने देखी हैं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों की ज़िंदगी में कम ज़रा नज़र आती है, या जनरली एक लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाती है। एंड ज़ाहिर है एक मोहर है कि कम काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तैसे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत टैलेंट रखते हैं, शायरी करते हैं, बहुत अच्छी महफिलों में मैंने देखा है इन्वॉल्व, एंड इट्स बीन फैसिनेटिंग। सो विल फाइंड आउट मोर। आप ज्वाइन इन करें कॉन्वर्जेशन में। अदीला हमारे साथ, शी विल ज्वाइन इन शॉर्टली इंशाल्लाह। Meanwhile, thank you Amir, thank you Ali Bilal for joining in. बताएं ज़रा कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। ज़रा इमोजीज इस्तेमाल करें, एक्टिव हो जाएं, पैसिवली ना सुने, एक्टिव हो जाएं। और जब तक अदीला आ रही हैं तब तक एक बहुत ही मुखलिस काम करें कि मेरा यूट्यूब ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत कोशिश है कि हम यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, एंड माय टीम इज़ वर्किंग हार्ड। इस सीरीज़ में भी जितने हमने डायलॉग्स किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैनी ऑफ देम आर बिन फैसिनेटिंग. So over 80 dialogues now on the quarantine series. All of them are available on my YouTube, on my Facebook, on Torque's YouTube, on Torque's Facebook. तो आप ज़रूर access करें. Some dialogues are relevant for startups, some for corporate professionals. Many अगर आप generic societal मौज़ूआत में interest रखते हैं, कुछ artists से हमने बात की है, and it's been an absolute pleasure. So I will recommend that do look at the playlist. Which we are very lovingly maintaining for you. जो लोग आप में से पढ़ने का शौक रखते हैं, my team works hard to also crystallize some of the ideas and put them out on Medium, so you can access the in writing. अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब 100 पूरे होंगे तो हम इसको एक ई बुक की शक्ल भी देंगे। सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं इस क्वारंटीन टाइम में, पाकिस्तान के थॉट लीडर्स से, ट्रेनर्स से, एक्सपर्ट से, प्रैक्टिशनर, fan of people who I've been a friend of, have had the pleasure of working with. So do look at all of these resources and do share it with people, your friends. Local content, desi content zara kam hai, and I hope that this attempt is helping a lot of us. Wonderful. Thank you, Tawseeq, for joining. Adeela, you have the last 2 minutes now. Agar aap aa jaएं तो आ जाए, वरना मैं बंद कर दूंगा live. I've learned this sentence, active हो जाए, passive ना रहे. It's good for being peaceful as well. Yes, active listening, not passive listening. Actively living your life. ज़िंदगी में survive कर रहे हैं या live कर रहे हैं, survive तो खुद ही हो जाता है. You don't have to do much. How am I spending time of quarantine? By doing this. फिर हमने अपने business को reorganize किया है. Torque, which is my company, alhamdulillah, for good 12 years corporate trainings कराते हैं, तो अब हम उसको डिजिटल शक्ल दे रहे हैं। कोशिश बहुत अरसे से कर रहे थे, अब कोई चारा नहीं रहा। फिर फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम मिला, बोथ ऑन माय फैमिली साइड इन कराची, देन इन इस्लामाबाद। सो बहुत अच्छा रीबूट मेरे लिए। ज़रीन ये जो है 13 साल में पहला ऐसा स्टॉप ओवर है,
वरना मैं भागता दौड़ता रहा हूँ जो सड़कों पे, जहाज़ों पे, और हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं. सो दिस हैज बीन एन एब्सोल्यूट, पहले तो शौक, और अब जो है मैं एंजॉय कर रहा हूँ. आप देखें, चाय पी रहा हूँ, मज़े में शो कर रहा हूँ, स्क्रीन खोलता हूँ, सेशंस चलाता हूँ, इतने लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ. सो आई फील फॉर द लाइव्स लॉस्ट. सैडनेस ज़रूर रही है इस पूरे टाइम में साथ. एंड आई जस्ट होप दैट वी गेट ओवर दिस सून, बट हम वैसे ही ना रह जाएं जैसे हम गए. ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा. सो थैंक यू फॉर ट्रिगरिंग दैट, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. ओके, अदीला जो है वो आ रही हैं. वीआईपी है, जरा वीआईपी आपको पता है थोड़ा टाइम लेके आते हैं. ओके, वंडरफुल. हु एल्स डू वी हैव? जरा बताएं कहाँ कहाँ से ज्वाइन इन कर रहे हैं. हेलो सलाम समर एहसन, हेलो सलाम. अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपने समर? आज के दौर में मैं एक्सेप्ट नहीं करता कोई फूल पत्ते परियां. यू शुड हैव अ पिक्चर, उसको मास्क कर दें, कुछ कर दें, ऐसा कर दें कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्टेबल मान लें उसको, लेकिन दिखाएं जरूर. आमना मलिक बच्चों की भी कुछ लगाती हैं, चलने मान लेते हैं. डाइवर्सिटी है ये भी. Hassan Jamil, I like your attitude. Always hope your tone is always motivating. Thank you very much, Hassan. You're very kind. I like that smile of yours and also your suit. And look at that hairstyle. Wonderful. टाई जो है ना, मुझे बचपन से बुरी लगी, शायद स्कूल से बुरे तजुर्बात रहे. I want to do a session for teenagers and guide them on how to become a trainer or motivate. I'd love to do a session, Sonia. I love to do many sessions. I'm a very prolific trainer. तो आप ज़रूर मुझे लिखें जो सुन रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, अब ये भी शुरू किया है, कल शुरू किया है. मैं वक्त ज़रूर जो कैलेंडर पे अवेलेबल है उसको जो लाइव पे डिवाइड करता हूँ उस पे से ज़रूर आपको मौका दूंगा. थोड़ा शायद बात का दूँ, बट आई विल डेफिनेटली डू दिस सेशन फॉर यू. वंडरफुल. लुकमान भावलपुर, थैंक यू वेरी मच लुकमान फॉर ज्वाइनिंग इन. अदीला आ ही चुके हैं अब. फातिमा, सिंगर्स भी ज़रा लेट आते हैं ना, आपको पता है, ज़रा हर सिंगर ज़रा माहौल बना के और ज़रा वक्त लगा के. और फातिमा उज़ैर अहमद, हेलो फ्रॉम यूके. Good to see you, Fatma. Thank you for joining. Hi, Zareen from Faisalabad. Sana Shamim, Walaikum Assalam. कैसी हैं आप? Thanks very much. Thank you, Hassan. Rifat Mushtaq, AOA. You're doing really good job. Thank you very much, Rifat. I hope you're doing good jobs as well. Do good jobs, okay? Nits Khan, Riyadh. Hello, hello. It's a lovely photo, Nits. Wonderful. Shoaib Haroon from Gujranwala. Good to see you, Shoaib. शाहरुख जावेद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमारा मौजू है आज का पब्लिक सर्विस, एन ओड टू पब्लिक सर्विस. हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से. आपके भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आप भी यकीनन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गए होंगे, आपने शायद साहब काम किया हो एज अ पार्टनर, एज अ व्हाटएवर जो भी आपकी स्किल है. शायद आप खुद पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हो, शायद आपके माता पिता, शायद आपके चाचू खाला फुप्पो में से कोई पब्लिक सर्विस में रहा हो, या दोस्त के अम्मी अब्बा रहे हो. ज़रा बताएं अपना पब्लिक सर्विस के बारे में परसेप्शन, अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम डायलॉग शुरू करने लगे हैं. अदीला आ चुकी हैं इस वक्त बगैर कैमरे के, तो जैसे ही वो आ जाती हैं मुकम्मल अंदाज में आई विल ब्रिंग हर ऑन. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इन, फॉर कीपिंग दिस अप. ब्यूरोक्रेसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे. Hello from Smart Pakistan. Salam from Mardan Sajad. Walaikum Assalam. Mohsin from Shikarpur, Sindh. Wonderful. So good to see many of you joining in from different places from across Pakistan and outside. Hi Asif. Wonderful. Good to know. Good to know. Asif, जरा मुझे लिख के भी भेज दिया करें कहानियाँ. कुछ लोग कहते हैं क्या फ़ायदा हुआ जालियावाला, आप इतनी तकरीर करके गए. मैं चाहता हूँ कि वो कहानी मैं आपकी वाली आगे कर दूँ अब उनके. And of course there are many of you and I must tell you that it's been an absolute pleasure. और हमने हमारी टॉक्स नहीं करती हैं, आप खुद करते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं. हिदायत अल्लाह का काम है, इंसान की सर्च है. पैगाम्बर मिल जाए कोई, कभी जवान, कभी बड़ा, कभी किताब, कभी मूवी, आपने तैयार होना होता है इंस्पिरेशन के लिए. सो आसिफ, आपके अंदर वो था जो कि ट्रिगर हुआ. मुझे किसी ने अभी एक टॉक में कहा आप आग लगाते हैं, मैं कहा नहीं आग नहीं लगाते, हम कहते हैं अंदर देखो, फिर वो अंदर देखते हैं तो उनको आग खुद ही नजर आ जाती है. So I'm sure that's your story as well. So yes, Adeela is with us. She has joined us. Syeda Adeela Bokhari is an expert technical educator and a vocational trainer.
is also a poet, painter, and singer. She has been singing since her childhood, though not professionally, and plans to release her first debut song, गाना release करने के लिए तैयार हैं. 96-97 में कॉलम्स भी लिखे द मुस्लिम के लिए. अदीला का करियर एज अ सिविल सर्वेंट 98 में शुरू हुआ. शी इज represented Pakistan as the head delegate in the 9th All Taxation Authorities of Islamic Countries Conference in Oman in 2012. She was a coordinator of UNESCO and UNEVOC and generated the first ever technical and vocational education and training TVET, जो टेक्निकल दुनिया वोकेशनल ट्रेनिंग को समझते हैं. टेफ्टा, TVET, इस तरह की चीज़ें जानते हैं. Adeela ने उस पर भी काम किया है. Co-authored the TVET Vision for 2025 for Pakistan and also authored Green Skills Pakistan 2015. She proudly led 8 countries delegation as a leader for administration for Occupational Skills Development Overseas Vocational Training Association by JICA, Japan in 2013. She's also very active in community services, has worked for Pakistan Relief Initiative. बहुत rich profile है, बहुत talented हैं. Scientific भी हैं और artistic भी हैं. Wonderful. Thank you very much for joining us, Adeela. Thank you so much for having me on show. हाय, बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते. अब तो मैं थक गया हूँ. मैंने बहुत देर बोला. अब आप. How are you? How is the lockdown, Corona time? Yeah, we are working despite all these things. We are in office. If you can see, I just finished my meeting, an e-conference on multi-indicative program and with all the stakeholders. It was interministerial meeting. So I'm here. It's wonderful, wonderful. Yes, this is worth acknowledging कि इस पूरे time में the government has been at work and everybody though complains good or bad, but recognizing that work, being at work, while many of us have stayed home, stayed scared. Thank you very much, Adeela, for joining us. आपसे हम आपका talent भी जरा जानेंगे, आपसे सुनेंगे भी कुछ. जब आपका दिल चाहे कुछ गुनगुनाने का तो मैं आपको भरपूर encourage करूंगा कि गाएं. आज बड़ा मौसीकी वाला मिजाज हो रहा है. साथ साथ कुछ सवालात हैं आपके लिए भी. I want to know more about public service from you and इंशाल्लाह comments में सवालात आप हमें join in कर सकते हैं जो साथ हैं. Please ask questions. Public service के हवाले से अदीला के बहुत rich experiences हैं as a female. बहुत successful profile build की है और that's not easy, we understand that. So lots to ask her. Join into the conversation, ask your questions. Let's go on. Adeela, थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बता दें as your own journey in public service. Well, before joining the public service, as you have already mentioned, I was writing for the newspaper as well. I used to write articles, different diversity of subjects, or it was on politics, it was on technical things as well, some human rights and all these sort of topics. But apart from this, I was also a passionate teacher. Wonderful. I used to teach at school level, but I think I really enjoyed that. So I was different in a sense, like I used to teach a zero period as well. So in that zero period, that was before the school starts, and every student in my class would be there just at, before the school starts, and they will discuss all their issues and all their problems, and I will concentrate on the weaker students, and like it was something I really enjoyed. And they used to love me so much. That's good to know. Yeah, but I joined the civil services back in 1998. And I joined as an assistant. First, it was 2 years of the training. Then after that training, I joined as Assistant Commissioner Income Tax in Rawalpindi. And then I worked as Assistant Commissioner and Deputy Commissioner in various stations like Sakkar, Karachi, Islamabad. And after that, I just took some days off and went on the family priorities to Cairo, Egypt, where I started this community work.
and I was working with an NGO's Operation Smile, raising funds for the cleft lip operations of the children. And I was doing this flood relief initiative for the Pakistan while staying in the Cairo. And I transferred so much funds here to help my people out. And this was something. And I was also teaching research methodologies at that time. And so it was quite like लगी रही है something. मुझे और volunteer घूमते work फिरते भी and नहीं है. everything. We have been Then around I it. came back in 2011. I joined back my department as Secretary Public Accounts Committee. And after that, I was working as Director General Accreditation, Certification and International Coordination at this Technical Vocational Education and Training, NAVTEC. So we actually implemented this TVET Reform Support Program, which was funded by EU and Germany. And we not only achieved, but we exceeded our targets. So this was one accomplishment. So I came back to FPR in 2016, joined back as Chief Information Technology, worked for data center upgradation, worked on ICT strategy 2019-21 for the FPR. And we so we have accomplished quite मजेदार पोर्टफोलियोज में माशाल्लाह पहुंच गई, ब्रेक भी लेकर आ गई. तो खास होते हैं ऐसे लोग. अब दो वजूहात हम जानते हैं, एक जो बहुत सिफारिशात रखते हो और दूसरे जो बहुत सारे ज़ौक़, टैलेंट और परफॉर्मेंस रखते हो अपने साथ. And I can confidently say that you come from the latter kind. Thank you Adeela for sharing your journey. कुछ comments हैं, सवाल हैं. Samar, yes, it's a pleasure meeting all the people, and I must tell you, Pakistan has some remarkable people. Get out, ये जो हर जगह पे 10 नाम लगे हुए हैं, 10 बड़े बुत हैं, उसी से लोग जानते हैं उस शोबे को और पहचान बन जाते हैं वो. I don't believe in that. I think there is a lot of diversity even in the talent that we have and the leadership that we have. There are many kinds of leaders in Pakistan and we must put them all out. उस्मान पूछ रहे हैं कि पीएम नैरेटिव बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा. उस्मान इसको थोड़ी देर बाद में लेंगे. But people are appreciating that, mashallah, you have done so well. Let's get to our first question. क्या ब्यूरोक्रेट्स को कोई चैलेंज है पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाने में? और मुझे एक डिस्कशन है, तो आप जरा प्लीज इसको अपने एक्सपीरियंस से बताएं. Well, I personally myself consider myself as a public servant. I never think कि हम अफसरशाही हैं. हमें जब इंडक्ट किया जाता है तो यही सिखाया जाता है कि you have to ensure the public service and ensure like what's the purpose of और मुझे जो लगता है like all my 22 years of the career, like wherever I have worked, I've made a difference and I have tried to contribute my best. So always considering myself as a public servant. बाकी मेरा ख्याल में ये ट्रिकी क्वेश्चन था काफी आपका. अब not all of us can be termed as public servants. Maybe we have exceptions, but we have exceptions everywhere. We have exceptions of the George Floyd, where now the Europe and the US are launching those protests and they are talking about the police reforms and everything. So these exceptions are everywhere, not just in Pakistan. It's a human psychology. Like some people, they want to like exercise their authority, and some people, they are there to serve. So that doesn't mean कि सारे यूरोप में और सारे US में सारे police officers वैसे ही हैं. There must be some good people around, and those good people are friends of people. They are helping them out. They are अभी जैसे recent example ले लें आप of this stock exchange building incident in Karachi. So don't you see the heroism there, the way they have countered this attack and the way they have saved so many lives? So we cannot actually generalize and look at the one side of the picture. We have to focus on the other side as well. So there are always two sides of the pictures. There are good people, there are some exceptions, but एक generalized conception नहीं हो सकता. So it's not a public.
So अब हम जब सरकारी लोग को बात कहते हैं तो हम कह देते हैं कबूल है. Tell us the side of public service that people like me, for example, don't know about. Public नहीं देख पाती, public को नहीं समझ आता, नहीं दिखाई देता. Please tell us about this. Regarding the side they don't know, like public servants can sing, or they can write poetry, or they can paint. The human being इंसान होता है. We are humans. इंसान होता है. We want some life work balance as well, which being a public servant is really difficult to achieve this work life balance. Because हमारे job नहीं है. Public servant का life work होता है. Can you believe that I have worked in my office till 5 a.m. and it was my father-in-law who first time came to my home and he said, तुम्हारा क्या 24 घंटे का नौकरी है? So these are the things actually people don't know. Like sometimes we have to work around the clock and we are on our toes, and we work at the cost of our health, at the cost of our families, and so much. I think this is something which is unseen, which is unbelievable. And it's not me, actually. There are so many people who are doing this. Wonderful. Bilkul, Amna Umar agrees with you. Well said. Agreed with ma'am. Faria कहती है always exceptions, expectations, exceptions. क्या कहना चाह रही है फारिया आज? Do bureaucrats really control the major policies of Pakistan? बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं. अदीला, आप मुश्किल में ना पड़ जाएं. क्या bureaucrats major policies control करते हैं पाकिस्तान की? अब अच्छा सवाल है, तो होना चाहिए. Policies, I would like to answer because I have been a part of several policies. Sure. So these policies are actually like when I was Director General Accreditation Certification, so we framed different policies for the TVET sector in Pakistan. So it was a consultative process, a whole consultative process with discussions with all the stakeholders, relevant stakeholders. तो policies इतनी आसान से नहीं बनती, और उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट अपनी इनपुट नहीं देता. ब्यूरोक्रेट तो सिर्फ उसको एक शेप देता है, एक फॉर्म देता है, एक लीगल वो देता है. बट बिहाइंड those policies are the discussions, is a dialogue, it's the inputs and the feedback we received. And then we framed those policies. So we developed this accreditation policy for the TVET sector. And then we developed, the performers, and then we developed at every stage, we had to consult all the stakeholders. Abhi ICT strategy हमने जैसे बनाई 1921 for the FBR. So even उसमें Pakistan Revenue Automation involved था, उसमें international जो experts थे IT के वो involved थे, provincial revenue authorities involved थी, and there were so many stakeholders with which we wanted to have the data sharing and data mapping options, so we can really identify the defaulters and chase only the defaulters and not the good people. So इसलिए हमने कुछ policies जब when you are doing this automation, when you are doing this, so you have to consult all the relevant stakeholders. So there is a lot of consultative process that goes behind the policy. So it's not like it's really, really a wrong impression. Like I am sitting here and I'll make a policy and you don't know. So it's not like that. Every policy goes through a process. बिल्कुल पसंद नहीं आई मुकेश. हमने बहुत सारे लोगों को आपकी बात दिखाई, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई. अदीला, said correctly. अच्छा जी, मुकेश, ये सवाल हम पूछ चुके हैं, आप ये प्लीज दोबारा से देखिएगा शुरू का हिस्सा. So you will get Adila's perspective on this. Okay, so tell us about some of the bureaucrats you have seen, some officers who do remarkable work. Heroism आपने of course बात की stock exchange वाली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खबरों से हटके, because there is a lot that happens to run a country like Pakistan, and it may not be at the scale that we expect. Expectations are always more, but for what happens, there are a lot of people at work, and I'm sure you've come across some brilliant stories. So talk about them. Yeah, I've met some amazing people, my seniors, who have been an inspiration for me.
तो मैंने उन लोगों को काम करते देखा है. Like there is a difference between a boss and a leader. So you will find both actually in the public service or in anywhere actually, whether you're in a private sector, whether you are in a banking company, or whether you will find all kind of people everywhere. So it's just like I do focus on the positives, and that's what, like, the way they delegate, the way they trust you, the way they build your confidence is really good. So I've learned a lot from them as well. So they are the people who put their heart and mind into their work, and I like it because I am also a passionate worker. So whatever I do, whether it's my office work, whether it's my other talents, I'll put my heart into it. So there are people. दूसरे टैलेंट आपके जो रुक नहीं रहे, बिल्कुल I can name one of my boss who has retired is Humayun Akil. He was a Karachi. He was a commissioner. And he was so good. He used to give me so much respect that he will stand and I'll say, well, why are you standing? So that gives me so much confidence, and he used to trust my work, and he used to appreciate and acknowledge. So we'll always find people like this. Then we have Fajad Nan Saab, who has recently been promoted to grade 22. He is a person who leads by example, not just by, opinion. So you will always find such people very inspiring, who lead by examples. And beautiful. That's great to know. And Mashia, you felt supported. You felt you've had good leaders. Bosses, आपने खुद ही बता दिया. Huzaifa, I'm very sorry. ये 10 बजे इसलिए नहीं है क्योंकि अदीला 10 बजे, पता नहीं 10 बजे उनको लगा कि अच्छी बात नहीं है लोगों से मुलाकात करना, तो उन्होंने हमें कहा कि मैं 5 बजे ही कर सकती हूँ. लिहाजा हमने एग्री कर लिया कि हम इसको 5 बजे करेंगे. वैसे हम 10 बजे करते हैं क्वालिटी सीरीज. थैंक यू फॉर आस्किंग. इन्फ्लुएंस पे जरूर बात करेंगे. यकीनन हर उस मौजू पे बात करेंगे जिसमें मीडिया हर वक्त बात करता रहता है. बिल्कुल हर जगह को वही बनाते हैं जो कि वो है, जिसके बारे में फिर हम कहेंगे यहाँ ऐसी बातें क्यों होती हैं. सो वी विल कम टू दैट. हाउ कैन वी इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी. हुकूमत का काम बहुत सारी सर्विसेज मुहैया करना है अवाम के लिए. एक कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, शहरी जिसमें रूल्स में प्ले करें. लेकिन शहरी होने के नाते वो बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी पेड सर्विसेज भी हुकूमत से लेना चाहते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं. In your experience, how can we improve it, and how can we, and talk about both the sides, both from awami lens and also from sarkari lens. Well, today in the post-COVID-19, we have realized like how much important is the automation, right? We want to go online for everything, for hosting a show, or for submission of any feature on, or for the e-banking and everything, and e-learning and everything. So everything is happening online now. So this is a way of doing things actually. And it's been emphasized since quite some time कि हमारी e-governance पे, corporate governance पे, इन चीज़ों के ऊपर focus होना चाहिए to make public service delivery much easier, so that the people doesn't have to interact with us directly. So this will also, reduce any chances of any exactly. So automation is something, online services, creating user-friendly applications, and removal of redundant processes, like how many files we use and how many things we are cutting. So we have to move this e-filing thing so we can work from home as well. Many countries globally are working from home, and many organizations, they are working from home. So I guess like this is one way we created help desk, electronic services. Then the most important thing is this data integration and data mapping exercise. So we can use the business intelligence to really catch the defaulters and really, it's like it is going to encourage the good people and at the public side. So you said talk about the both sides. So at the both sides, there are
good people, and at the both sides there must be something wrong. So there the public has to realize, like, okay, we have to pay our taxes, we have to pay we have to do everything as a good citizen. So we expect it from everyone, and we should expect it from everyone, not from one side. It has to be two sides. Everyone has to fulfill their obligations, whether they're on the government side or they're on the public side. True that. अच्छा मैं वैसे ऐसे ही अपनी as a Pakistani citizen, because I access a lot of services, and sometimes मुझे मिल भी जाता है थोड़ा privilege, कोई जानता होता है तो काम आसान हो जाता है, और आपको देखा है, लेकिन कुछ times जो है मुझे direct as, or many a times actually as a direct citizen जब मैं जाता हूँ, I must tell you most of my encounters have been very pleasant. I have gotten the job done, whatever due process it was, जितने लोग थे, तो एक बहुत बड़ी perception भी attached है कि काम नहीं होता, service नहीं मिलती. यकीनन कुछ जगहों पे शायद मुश्किल हो, लेकिन I must say that there has always been somebody, a group of people who were there to make the task happen, make it happen despite the pressures they had to face themselves. So I admire people like yourselves for that. कुछ सवालात हैं आपके लिए इरफान तैयब. Irfan, I didn't know you have a twin brother. Irfan, पूछ रहे हैं कि you are an inspiration to a lot of young people, especially girls. How can they learn to make a career like yourself? Well, for the girls, I always have a soft corner. I would like them to be themselves. I would like them to trust themselves, trust their guts, trust how capable they are and what they are capable of achieving, and they can really do it. We need a lot more girls, actually. And the things are changing now. Like when I joined the civil services, maybe it was like out of 200 people, we were like 20 girls. That's all. And now I'm seeing like the number is improving. And it should improve because more than 50% of the population is women. यार काम ये बात है कि अदीला आप लोग काम बहुत अच्छा करते हैं. Handling of COVID-19 crisis in the countries where the leaders are women is really appreciated globally as well. But I must say this कि बहुत अच्छे diligent होती हैं. Young girls, women, they generally are more committed to the task and they do a better job in Pakistan. My personal experience, better professionals, far better professionals than males are. Maybe we take it for granted. Okay, somebody is asking कि क्या करती हैं. ज़रीन पूछ रही है कि क्या करती हैं जब स्पेशल, ये ज़रीन ही भेजती है स्पेशल रिक्वेस्ट. ज़रीन उस्मान, क्या करती है जब आपको स्पेशल रिक्वेस्ट आती है लोगों की तरफ से? वैसे मेरे पूरी कर देनी चाहिए. याद रखते हैं. What does she mean by special request? Good question. Bureaucratic question there. What do you mean by special request? Okay, they'll always ask you the question so that you go back and work it out. I like it. All of my bias is also sprinkling out. Sorry, Adeela, for this. Adeela, बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं. मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछूंगा. If they are asking about the special request like favoring someone, I am not a person. I have stood up for the merit and even for all the procurement things. You can ask each and every person, a bidder or a stakeholder who was there. Like, it was totally transparent and fair. Even those people who were recruited, everyone was on merit. I knew no one of them. Jari, be on that side. Irfan is also asking, what is your ultimate satisfaction working as a public servant in your career? You know what satisfaction I have? It's the satisfaction within my heart. Like, I have done something for my country. So I'm doing something for my country. So I'm a big patriot, and I believe like I can make a difference. For example, even if there is a perception like justice denied, so at least I have imparted justice wherever I could at my level, jitna mera daira ikhtiyar hai. And that means that I've done something.
And I have enforced that transparency. I have enforced that accountability. So what, at the end of the day, maybe I am not getting so much reward in the sense of, in financial terms or other terms, but there is a satisfaction, like I'm doing something. And when I look back, like 22 years of my career, wherever I have worked, I feel happy, like, okay, I contributed something somewhere and made a difference in someone's life somehow. That's so true, and it's important to carry that. अगर आप कोई and it's I don't understand कि लोग क्यों numbers की ही हर वक्त बात करते हैं. One life change, one person saved in the right moment, one person facilitated in a tough environment is a job well done, is a job worth saluting. And there are plenty. There's so many who reach out to people like yourselves day in, day out, all the time. Okay, so आपके बहुत सारे और टैलेंट्स हैं, मैं आपको गुफ्तगू में लगाए रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ गा के सुना दे, कुछ शायरी सुना दे, और दोनों, एक आपका अपना भी गाना आने वाला है, I've heard, inshallah. So I would like to hear that in some form, but also something which is popular and people can sing along. So दो कर लें. मैंने आपको कहा आज मेरा बहुत मौसीकी का मूड हुआ है. अच्छा, तो आप क्या सुनना चाह रहे हैं, पोइट्री सॉन्ग? So let's start with poetry if you like. Yeah, right. I'll start with the poetry, I guess. And ये मैंने अभी recently कुछ लिखी हैं, तो like in 2020 क्योंकि ये कुछ हालात भी क्वारंटाइन कुछ देर हम भी रहे तो कुछ करने को मिला. गर तू नहीं है पास तो किससे मिले हम, गर तू नहीं है पास तो किससे मिले हम, इस बेकरार दिल का सबक किससे कहें हम, इस शहर में मुमकिन ना हुआ मिलना हमारा, इस शहर में मुमकिन ना हुआ मिलना हमारा, आदूर कहीं जंगलों में जाके रहे हम. कटती रही ये उम्र ख्वाबों के सहारे, कटती रही ये उम्र ख्वाबों के सहारे, अब आओ हकीकत में कहीं फिर से मिले हम. आजाद हवाओं में चलें हंसते हंसाते, आजाद हवाओं में चलें हंसते हंसाते, जो भूलने को है वो सबक फिर से पढ़े हम. वाह, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस. कब से शायरी भी बहुत बचपन से कर रही हैं? When I was in college maybe. बड़ी कोई क्या कहते हैं, बड़ी तकलीफ से गुजरी होंगी आप जो शायरा बन गई. क्या लिंक है इस बात में? It's not like that everyone goes through everything, that's what I believe. आपके मसाइल की, आपके हालात की शायद नोयत फर्क होती है, लेकिन you always get to go through all the stages of life with pain and pleasure and joy and grief, and everything comes to everyone. So for me, it's not like if you tell me to write something and sit down and write, I can never write it. It's like in the middle of the night, I'll wake up with some ideas in my mind and I start writing. It's like spontaneous overflow. It's spontaneous overflow of your emotions and feelings. It's not something you can really put something like, it's not, for me, it's not something like professional thing. Like you tell me to write something and I'll just create. It's not like that. Wonderful. It has to come. जैसे आपको revelation आती है, आप सो रहे हैं, आप आधी रात को उठ के बैठ गए 3 बजे और आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, whatever comes into your mind. So I'm that kind of poet. Beautiful, beautiful. कोई कह रहा था कि can I join for a life जुगलबंदी. एक तो हीरो आ गए लुकमान, अभी तुमने सुना भी नहीं है गाना और ऐसी तू जुगलबंदी तू लगा ले पे. But yes, if you would like to join in, the link is out. Feel free to. Okay, would you like to tell us recite anything else? कोई और शायरी सुनाएंगी या कुछ गाना सुनाएंगी? चलें, अभी एक आपको मैं एक गजल सुनाती हूँ.
अब के बहार आई थी कई मौसमों के बाद, अब के बहार आई थी कई मौसमों के बाद, कैसे खिलेंगे गुंचे जाना तेरे बगैर। खामोश लब न देख दिल में तू झांक ले, खामोश लब न देख दिल में तू झांक ले, हम तेरे हो चुके हैं जाना तेरे बगैर। वाह वाह, हम तेरे हो चुके हैं जाना तेरे बगैर। हम सब्र आजमा थे जहां से गुजर गए, हम सब्र आजमा थे जहां से गुजर गए, तय कैसे होंगे फासले जाना जाना तेरे बगैर। सुनसान पड़े हैं शहर, अब ये कोविड सिचुएशन आ गई है। सुनसान सुनसान पड़े हैं शहर मध्यम है रोशनी, सुनसान पड़े हैं शहर मध्यम है रोशनी, कैसे कटेगी उम्र जाना तेरे बगैर। कैसे कटेगी उम्र जाना तेरे बगैर। किसके नाम लिखी है आपने ये शायरी मुकेश, जानना चाहते हैं? मुकेश, क्या बॉय के बारे में जानना चाहते हो कि मैम अदीला के बॉय कौन है? मैम अदीला, क्या आप बताना चाहेंगे क्या ये जायज इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्या ये एक जायज पॉलिटिकली करेक्ट सवाल है एक फीमेल ब्यूरोक्रेट से एक फेसबुक लाइव कॉन्वर्सेशन में ये पूछना? Yeah, it's dedicated. It's dedicated. अब ये नहीं बताया dedicated to. वाह खूबसूरत, साद रज़ाक को बहुत पसंद आई आपकी शायरी। अच्छा भाई, जल्दी से I would like you to sing some as well, and meanwhile encourage people to ask. Please ask your questions. हम कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, लुकमान आ ही चुके हैं तो लुकमान को भी सुन लेते हैं। Okay, first let's hear it from you, Adeela. आप कुछ जरा हमें गा के भी सुना दें। You're a wonderful singer, and I wish you great luck with your upcoming song. Talk about that as well. Mhm. Okay, so I think what should I sing? Actually, you invited me so unprepared, and that's where you rock, right? लेकिन थोड़ा स्पेशल प्रेप होनी चाहिए, तो उससे जो है ना फ्रेशनेस भी आती है और थोड़ी सी अच्छी स्ट्रक्चर भी आती है, वरना बहुत वेल कुक मुझे जरा पसंद नहीं आता। मीडियम वेल, नॉट इन फूड बट इन लाइफ कन्वर्सेशंस। So आपका क्या मूड क्या हो रहा है आपका सुनने का? अच्छा, जल्दी से I would request you, because I would also like to ask you the question, so please sing us your favorite, something that you deeply connect with by some other singer, which we can also sing along, and Lukman can too. और फिर आप अपना भी हमें बताएं जो आपका गाना आने वाला है उसके बारे में, और वो भी कुछ सुना दें। Okay, can I search a bit? Because you invited me so unprepared. समर ये भी पूछ रही हैं कि आप कौन सी शायरी पढ़ती हैं खुद? मैंने different शायरी पढ़ी है। I from English. My first master's was in English literature, so I got to know the Wordsworth and Shelley and Keats and everyone. So that was quite inspirational, the T.S. Eliot and everyone. But then I was also reading Parveen Shakir, Faraz, Ghalib, the famous Faiz Ahmad Faiz, and so I've read a lot in Urdu as well as in English. फारिया पूछ रही है कोई जॉनर बता दें अपनी सिंगिंग का, ताकि हम रिक्वेस्ट कर सकें। What Wordsworth says is like the poetry is a spontaneous flow of feelings and emotions, and I really believe it. Like that's what I say. Like it's a spontaneous overflow of feelings and emotions. I cannot really just sit and write something. अच्छा लुकमान, तुम सुनाओ जब तक मैं अदीला को टाइम दे रहा हूँ। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, योर द सॉन्ग दैट विल सिंग द बेस्ट। अगर तुम पाकिस्तान आईटी में जाते तो ये सुनाते। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैम का टेस्ट फील करके उनको कोई गाना डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। बाकी किसी को पसंद आए ना आए, बस आई विश कि मैम को जरूर पसंद आए। चलिए गो, जल्दी से, वक्त कम है। ये गजल है मेहदी हसन साहब की। ओके। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई यूं, जिंदगी की राह में
एक रोशनी अंधेरों में दिखला गया कोई यूं जिंदगी की राह, वो हादसा वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, वो हादसा वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन से यूं छा गया कोई यूं जिंदगी की राह। वाह वाह वाह, थैंक यू बहुत थैंक ही यू। कुछ तुमने दिल से गुनगुनाया है मैम के लिए. इट्स वंडरफुल. I like थैंक it. यू सो You have a मच। beautiful voice, mashallah. Thank you for joining in, थैंक Lukman. यू Adeela, quickly थैंक यू। introduce. Sorry, we took a lot of minutes today, but इतना अच्छा गा रहा था, मैंने कहा चलता रहे. Thank you, Lukman. Bye bye. So it's my turn now. Yes, it's your turn now. So, ओके, एक मैडम नूरजहां की गजल है, आशियाने की बात करते हैं। Rafa. आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम ज़माने की बात करते हो, तुम ज़माने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह वाह, बात करते हो. हादसा था गुजर गया होगा,
हादसा था गुजर गया होगा किसके जाने की बात करते हो किसके जाने की बात करते हो आशियाने की बात करते हो. वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत भाई. आप क्या कर रही है पब्लिक सर्विस में? आप तो गाने गाए. सोच रही हूँ रिटायरमेंट लेके यही शुरू कर. It's wonderful. Lots of love for you. Thank you, Amna, Faria, Irfan, Mukesh, Faiza, Sadaf. Sadaf, I saw your Insta and mashallah, you sing so well. I didn't know. This is very good. Sonia, thank you very much. And Lukman also, thank you for joining and singing some for us. अदीला क्या मूड है? एक अपना भी सुनाई दें. कुछ मैंने सुना है आने वाला है. You're very excited about the launch. No, it's actually a remake of Iqbal Bano, जो not actually नहीं, गुलबहार बानो, sorry. And आपने वो सुना होगा इश्क में कैसी मजबूरी. So we have tried to make it a remake from typical कैसी tradition. मजबूरी इश्क में अदीला? क्यों ये इश्क की इतनी मजबूरियां, इश्क की इतनी कच्चन राहें? No. I'm not just hopeless romantic. बता के छोड़ी, क्या मसला क्या है इश्क का? Ishq is the soul of universe. Without this, there is nothing to human existence, I think. It's for example, if I'm doing hiking, I just feel this inside me, everything, I enjoy the sound of the water. I enjoy the clouds that are spreading around my head, and I can feel that. So that's what I'm saying. Like, I'm an intense spirit, so I feel things intensely. Wonderful. Go on, आपने जो किया है remake. And then I have read Shams Tabriz, and I have read Rumi, and I have read so many Sufi poets and everything. So I believe, like, I'm a kind of a Sufi as well, a Darwish. Yeah, मान लिया. Wonderful. So, are you gonna sing it for us? I think, wait for the release. It's coming soon. Oh, it's coming soon. Okay, wonderful. We are in the 53rd minute. I would like you to answer a couple of questions. अगर आप कुछ और गाने के मूड में हैं तो वो भी सुना दें. I would like to know, what is it like for females in public service? Well, it depends. If you're a high-value woman, how would you carry yourself, and how would you perform? How would you make a difference? How would you go the distance, and how you carry yourself actually is important for me in every walk. If you're a high-value woman, you have to show you are really capable, and you are really passionate about your work. So for me, it's like I've worked in so much diversity. For example, from information technology to the technical education, and to the revenue collection, and to all these community welfare things, and everything was diverse and different. But when you put your heart into something, you can really do something. और फिर आपकी एक brand बन जाता है, एक following बन जाती है. Even though maybe nobody is liked by everyone, and it's really impossible. There are a lot of people who are not going to really like you, and there are lots of people who are going to like you. So we shouldn't expect like we are liked by everyone. So मेरा भी यही है कि जाहिर है जब आप one thing I will always quote is like जब मेरा CSS हुआ था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी, and I'll try to quote it here.
उन्होंने कहा था कि बेटा सही रास्ता हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें उस पे खड़े रहना है। एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, चाहे कितनी भी मुश्किलात आई, आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, एंड आई फेस्ड एवरीथिंग विद करेज। और दूसरा, मेरी वालदा ने ये कहा था जब मेरा CSS हुआ, तो आंखों में आंसू लाके उन्होंने कहा कि बेटा दरख्त पे जितना फल लगता है वो उतना झुकता है। सो आई हैव ऑलवेज बीन हम्बल. So this is what my parents have taught me, and this is what I feel in my heart. So whenever I am in doing something for the public service, I always keep this in mind, like I have to be humble, I have to be a public servant and not really afsarishahi. And secondly, I just feel like I have to do the right thing no matter what. Yeah. Wonderful, wonderful. Would you encourage young boys and girls to think of public service? अगर सोचें तो कैसे प्लान करें अपने करियर्स? देखिए, it depends. आपका पैशन क्या है? You want to do something for your country? You want to do something for yourself? You want to do something for some organization? So first you have to think, what is your priority? If money making is a priority, maybe a private sector job will suit them, or the highest paying jobs. But if you want to really make a difference, I would encourage them, if they want to do something for your country, if you really want to do, फिर आपकी personal interest आखिर में आएगी, being a public servant. So I will, to be an inspirational leader, to have a fan following, to make a difference, you have to put yourself at the last. It's first your country, then your organizational interest, and then your personal self. So if you can really do that, I would say, okay, yes, sure, you should join public service. We need a lot more people like this. Wonderful. Thank you, Adeela. This has been very refreshing. आपने बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए, शायरी भी बहुत खूबसूरत सुनाई, और आवाज़ भी आपकी बहुत ही तबाही आवाज़ है भाई। इस आवाज़ को थोड़ा और लाउड कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें. That's what I would suggest. We are in the last minute. What would you like to leave us with? Would you like to tell a story, maybe sing some kalam, explain us, leave us with some meaning? This has been fantastic. Please stop it at the close. So what do you want me to do? You could sing some and explain to us a kalam जो आपके लिए बहुत meaningful हो, आपके लिए बहुत मायने रखता हो और आप हमारे लिए पैगाम के तौर पे छोड़ना चाहें. Kalam from my own poetry, or anything? You could आप शायरी में बता दें, गाने में बता दें, तो आप heavy multi talented, so जैसे भी बता दें. I think ये तो आपने मुझे, you caught me so unprepared. That wasn't fair, actually. I would have thought about it. All right, I'm telling you, raw is better. Really? Thank you very much, all of you, for joining in, for your interaction. Okay, so maybe I'll say something like knowledge, experience, and wisdom. It's most of our mind and body, they are conditioned by our subconscious and our unconscious mind. It is conditioned by the thoughts what we are taught, actually, what we have learned throughout our childhood, and what we believe is us. But मैं ये कहूँगी to everyone is to look into your heart, actually, because into that you will find your consciousness. That consciousness, what you are capable of, and you can really look into infinity and into your limitless soul. So this is my message, like whatever you are doing, do it with all your heart and do it with all your passion, and pursue the things that you really love, and not what you are taught, what not you have learned, what you have. So you can only make difference once you really believe you can. So know how capable you are. Wonderful.
थैंक यू वेरी मच अदीला, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हसन जावेद, आपकी एंट्री पे कुछ हमारी एक उस्ताद थी, वो कहती थी यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि यकीनन आप इस क्लास के लिए तो नहीं आए थे, इस क्लास का वक्त खत्म होना चाहता है। थैंक यू अदीला, स्टे वेल, विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस विथ योर अपकमिंग म्यूजिक एंड विथ योर वर्क एज अ पब्लिक सर्वेंट। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। Thank you. Good Hafiz. That was Adeela. What a wonderful woman. What a wonderful, talented public servant. Takes pride in what she does. Lots of technical work on her profile और साथ साथ artistic काम भी करती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें join किया। Thank you very much, Adeela, once again. Thank you very much, all of you. Samar, thank you. Thank you, Zareen, Hassan, Irfan Tayyab once again, Faria Noman, मुकेश, आमना, उमर, सदस्यानी, सोनिया फाद, हसन जमील। खुश रहें। हमारा यूजुअल टाइम इज 10 to 11। कभी कभी हम उसको ऊपर नीचे करते हैं बेस्ड ऑन गेस्ट अवेलेबिलिटी, बट द क्वारंटीन सीरीज कंटिन्यूज। आई होप यू स्टेइंग सेफ, द न्यूज अराउंड यू इज गुड, यू बीइंग अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर in the society, you're being a positive news generator around you. बहुत टेंशन वैसे ही है। खुदारा अपना नाम ऐसे लोगों में लिखवाएं जो आग बुझा रहे थे, ऐसे बने जिनका अमल मुतासिर करे, इंस्पायर करे, ना कि शिकायत और गंदगी में इजाफा करे। खुश रहे।